हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 पार्ट 2। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 फिगर इट आउट पेज नंबर 19 टू 20 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इफ ए शॉपकीपर बाइज ए ज्योमेट्री बॉक्स ऑफ 75 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 110 rupees, what is his profit margin with respect to the cost? तो हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। एज वी नो, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाला जाएगा? जो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, दोनों को माइनस करके हम सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के बाद उसका प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, जो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हम इसको इधर लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन फॉर्मूला है, तो हम इसे नोटबुक में ही लिख लेते हैं। तो ये है फिगर इट आउट पेज नंबर 19 टू 20। सो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लिखने से पहले हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस CP। सेकेंड फॉर्मूला, जब हमने प्रॉफिट निकालना है फिर हमें लॉस भी निकालना आएगा हमारे आगे क्वेश्चन, तो उसमें होगा CP माइनस SP, क्योंकि इधर CP इज ग्रेटर देन SP। थर्ड, प्रॉफिट मार्जिन is equal to profit by CP multiply 100, and same of loss by CP multiply 100। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इफ ए शॉपकीपर बाइज अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर 75 रुपीज, उसने ज्योमेट्री बॉक्स को 75 रुपीज के कॉस्ट प्राइस पे खरीदा है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हम डाटा फिल करेंगे। CP इज इक्वल टू 75 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 110 रुपीज, विच इज आवर सेलिंग प्राइस। देन कम्स आवर प्रॉफिट। Profit is equal to SP minus CP, which is equal to 110 minus 75 rupees, which comes 35 rupees. Profit margin is equal to profit by CP multiply 100, and our profit is 35 rupees. 35 rupees by our CP is 75 rupees multiply 100, which is equal to 35 becomes 7, cancelling out it, and 75 becomes 5 and 15 by 100, so it becomes 700 by 15, okay, which later on becomes 140. So it's not 140 by 3%. So as we all know, we have to write it in our decimal form. So in decimal form it will be like 420, so it will become 6,
and again 20, 46, and this will be a recurring rational number 46.46. सो जैसे कि हमने कई बार हमारी वीडियो में ये कहा है कि इस बार का मतलब होता है रिकरिंग, तो इसे आपको याद रखना है। फिर जैसे कि हमने प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया है, तो इस पे हम एक खुद से 100 सेंटेंस लिख लेंगे। आई एम ए कारपेंटर एंड आई मेक चेयर्स। आप एक कारपेंटर हैं और ये चेयर्स बना रहे हैं, तो जो मटेरियल्स लग रहे हैं चेयर के लिए वो उनका कॉस्ट है 475 रुपीज़। सो ये हमारा CP है या SP, ये हुआ हमारा CP मतलब कॉस्ट प्राइस। एंड आई वांट टू हैव ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%। एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल अ चेयर? सो सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं, डाटा को हम फिल करेंगे। हमारा CP इज इक्वल टू 475 रुपीज़, SP इज इक्वल टू ₹X, हमने इधर एक वेरिएबल लिया है, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन multiply the CP, and SP, sorry, we have also to fill up the profit margin data, which is 50%, meaning half of the CP. So as we want to have the profit margin of 50%, we have to mark the what do we say, that profit margin is equal to profit by CP multiply 100. As we know, our profit margin is 50%. Our profit is unknown. CP would be 475 rupees multiply 100, and multiplying this would result in P is equal to 50 multiply its reciprocal 475 by 100, this in this cut 10 5 2, profit is equal to 475 divided by 2. So this will result us in 237.5 rupees profit. As we know, our SP is equal to CP plus profit, which would result us in rupees and 475 plus rupees 237.5. So keeping this in mind, our SP would be the sum of these, and which is equal to 712.5. So the carpenter needs to sell the chair for 712.5 rupees to get a profit margin of 50%. This was a very easy sum, and if you know the formulas, you can do it in just seconds. Next is the total sales of a company, also called revenue, was 2.5 crore last year. They had a healthy profit margin of 25%. What was the total expenditure costs of the company last year? So here we have got the total sales of the company. When a company sells something, it gets its sales. If it would give some product to its customer, मतलब अगर वो अपना कुछ भी प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को देगी, तो उसकी वो सेल्स में काउंट होगा, और उस सेल को हम कहते हैं रेवेन्यू। एक कंपनी का जो सेल है वो है 2.5 करोड़ लास्ट ईयर, उनका प्रॉफिट मार्जिन 25% था, तो हमें उनका CP निकालना है। अब इधर हमें लास्ट क्वेश्चन में SP निकालना था, इधर हमें CP निकालना है, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सो एज वी ऑल डू, हम डेटा फिलअप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है CP
equal to rupees X, SP is equal to rupees 2.5 crores, and profit is equal to 25% of X equal to X by 4. Simplifying it would result us in X by 4. X is our CP. X by 4, and so as we know, profit margin is equal to 25%. This was a very healthy profit margin, and so to calculate our CP, we will also use this formula as we did last time. We have to keep the profit margin in our mind and do this. So again, profit margin is equal to profit by CP multiply 100. Since our profit margin is equal to 25, profit is unknown, CP is also unknown. We will keep this in our mind. X by 4 let's do something else that we can change it. Since our SP is equal to CP plus profit, we will use that. This is not applicable, as this would be a very long time taking sum and not easy to remember. We will take the SP formula. SP is equal to CP plus profit. SP is equal to 2.5 crores, which is equal to X plus X by 4. जैसे कि हम जानते हैं कि एक किसी भी नंबर को एक फ्रैक्शन से ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसे दोनों फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बना देंगे. 4/x प्लस x by 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. जैसे कि हम जानते हैं कि ये 1x है और ये 4x, तो हमारा जो आंसर होगा वो 5x by 4 रहेगा, 2.5 करोड़. सो इधर हम एक बार अपना लास्ट स्टेप फिर से लिख देंगे. अब हम इसको आगे करेंगे. 2.5 को वैल्यू लगा देते हैं और मल्टीप्लाई इधर x 5/4 को इधर रेसिप्रोकल करके डालेंगे, मल्टीप्लाई 4/5. ये 2.5 के बजाय 25/10 and this would be cancel out. 5 multiply 4/10. सो हमारा जो x है वो आ रहा है 2 करोड़. सो CP is equal to 2 करोड़. सो फ्रेंड्स, ये भी बहुत एक इजी सम था. हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. A clothing shop offers a 25% discount on all shirts. If the original price of a shirt is 300, how much will Anwar have to pay to buy this shirt? ओरिजिनल प्राइस है 300, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है और हमें डिस्काउंट मिल गया है, तो 30 रुपीज़ 300 रुपीज़ में से 25% की बजाय हमें 25% डिस्काउंट की वजह से हमें उसका ओनली 75% पे करना होगा. मतलब 25% हमने उसको फ्री में दिया है, 75% का पेमेंट उसे देना होगा. तो अभी हम इसको एक अलग तरीके से करेंगे. डिस्काउंट इज इक्वल टू 25%. SP इज इक्वल टू 300 रुपीज़. तो हमारा जो ये रिटेल प्राइस would be
25% 300 minus 25% ऑफ 300, मतलब हम दोनों वैल्यूज को कट कर देंगे। तो 300 रुपीज माइनस दिस एंड दिस कट 75 25 multiplied 3 75 rupees, and this would result us in 225 rupees. So हम तो अनवर कितने रुपीज में वो शर्ट को खरीद लेगा? 225 rupees. Next question. The petrol price in 2015 was 60 rupees and 100 in 2025. What is the percentage increase in the price of petrol? तो हम इसे सिंपली निकालने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, initial price in 2015, which is equal to 60 rupees, and current price in 2025 is equal to 100 rupees. So difference is equal to rupees 40. So the increase percent is equal to difference by initial price multiply 100, which is equal to 40 by 60 multiply 100, which is equal to 2 by 3 multiply 100, and this would result us in 203 divided by 200 by 3 परसेंटेज। और अब जब हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 6, फिर वापस 26.6 रिकरिंग, विच इज इक्वल टू 66.66%. सो दिस वुड बी आवर आंसर. तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा. हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे तब थोड़ी सी इधर नंबरिंग मिस्टेक है, ध्यान रख लेना. सैमसंग बॉट अ कार फॉर 4,40,000 आफ्टर गेटिंग अ 15% डिस्काउंट फ्रॉम द कार डीलर. व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? रिटेल प्राइस कितनी थी? 4,40,000, डिस्काउंट 15%, ओरिजिनल प्राइस क्या? तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा सिमिलर था, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था. अब ये है सिक्स्थ क्वेश्चन, इधर मैं मार्क कर देता हूँ. सो इधर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? सेलिंग प्राइस. रुपीज 4,40,000, डिस्काउंट is equal to 15%, and so the retail price is equal to. अब हमें रिटेल प्राइस निकालनी है. हमारे पास डिस्काउंट 15% का हुआ है, तो हमने कितना परसेंट पे किया है? वो है 85%. 85% पे किया है, मतलब 85% जो है रिटेल प्राइस का वो था सेलिंग प्राइस. सो अब हम उसे क्या करेंगे? इज इक्वल टू SP प्लस डिस्काउंट. डिस्काउंट परसेंट हमें किस पे मिला? रिटेल प्राइस पे. तो रिटेल प्राइस पे मिला है, तो इसका मतलब SP जो था हमारा 440,000 प्लस 15% ऑफ X
अब रिटेल प्राइस भी हम एक्स पे कर लेते हैं. एक्स इज इक्वल टू 4,40,000 प्लस 15 और 100 को हम ऐसा कैसे रहने देंगे, नहीं 5, और इसे हम कर लेंगे 3 से, सॉरी इसका 3/20, 3x/20. अब इसे हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. x माइनस 3x/20 इज इक्वल टू 4,40,000. अब x की वैल्यू हम इन दोनों को माइनस करना है तो इसलिए 20x -/20 माइनस 3x/20 विच इज इक्वल टू 17x/20. अब इसकी वैल्यू 4,40,000 है. अब हम x की वैल्यू निकालेंगे जो होगी 4,40,000 मल्टीप्लाई 20/70. सो जब हम इस क्वेश्चन को फुल्ली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 15 लाख. x इज इक्वल टू 5 लाख, सॉरी. सो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया है. फोर्थ क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है. 1600 people voted in an election and the winner got 500 votes. What percent of the total votes did the winner get? Can you guess the minimum number of candidates who stood for the election? So question number 7. जैसा कि हम टोटल वोट्स अगर उसे मिलते तो होते हैं 1600 और मिले हैं 500, मतलब वोटर परसेंटेज इज इक्वल टू 500/1600 multiply 100. This in this cut, that would result us in this 8 and 20, this 4 and 10, 2 and 5. 5 5 is 25, 25/2 which is equal to 14.5. Means 14.5% of the voters voted into the winner party. Since it was 14.5%, sorry, it would not be 14.5%. There's some calculation mistake, sorry. Which is equal to 500/1600 multiply 100. This in this 0 cut, 16 cut, it would become 8 and this would become 250. This would become 25. Sorry for that calculation mistake. 125 divided by 4 which is equal to 31.25%. So this percent of the voters voted to the winning party and the remaining voters voted to another parties. So the minimum party, let us minus this to 100%. How many voters didn't voted to him would be voted percent who did not vote to him is equal to 100 minus 31.25 which is equal to 0.75 because of this, and 31.25 would become 75 point. This would be 68.75% of the voters didn't vote to him. Since the minimum was 31%, so other parties would not be in the majority. मतलब सभी पार्टीज मेजोरिटी में नहीं होंगे और इस वजह से ये 30 से नीचे ही नीचे होंगे. 30 अगर मिनिमम परसेंट निकालें तो 30 होंगे. 3-4 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि अगर इसको 30 मिनिमम होंगे 31%
0.25% से ज़्यादा वो जीत गया होगा। 0.2% अगर इसमें काटे हम 68% में 31.25 नहीं 31% भी हम अगर काट लें तो हमारा जो आंसर होगा वो 37.75 रहेगा, जो किसी भी पार्टी को जिता सकता था। 37.75, एक ये, दो, तीन, मतलब 3 पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। सो मिनिमम कैंडिडेट्स would be 4 including this 2. Next, the 8th question. The price of 1 kg of rice was 38 rupees in 2024. It was 42 in 2025. What is the rate of inflation? Inflation is the percentage of increase in price. So जब हमें इसका आंसर निकालना है तो हम सबसे पहले दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे, जो है 4/38 मल्टीप्लाई 100। जो इसका आंसर होगा वो इसका इन्फ्लेशन रेट होगा। सो हम इसमें ज़्यादा इनपुट नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 4/38 मल्टीप्लाई 100, which would lead us to 200 by 17%. No, this wouldn't be 17, it would be 19. So इसका जो परसेंट वाला जो है पोर्शन वो आप निकाल के देंगे, ये आपका रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 का 200 by 19 का परसेंटेज का डेसिमल फॉर्म आपको निकालना कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सही आंसर को पिन किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A number increased by 20% becomes 90. What is the number? So question number 9 is equal to, let the number be x, increase percent is equal to 20%. Initial value is equal to x, final value is equal to 90. Let it be 90. Let us say x plus 20% of x, which is equal to 120% of x. This would get us 6/5, and this value is 90. 90 by is equal to 6x by 5. Let us reciprocal this, and 90 multiply 5 by 6, 6 and this cut, and this becomes 3, and this becomes 45. 3 and this cut, 15 multiply 5 is equal to 75. So 75 was the number that was increased by 20% to get us 90. A milkman sold 2 buffaloes for 80,000 each. On one of them he made a profit of 5% and on other a loss of 10%. Find his overall profit or loss. जैसे कि हम जानते हैं कि इसका हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। एक का प्रॉफिट था 5%, एक का लॉस था 10%। उसका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम हमारे पास 2 पार्ट कर लेंगे, बफेलो 1, बफेलो 2। सो हमारा सबसे पहले दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सीपी जो है, सॉरी, हमारा दोनों का एसपी इज इक्वल टू 80,000 और एसपी इधर भी 80,000।
प्रॉफिट वाइज में 5%, लॉस वाइज में 10%। मतलब इसमें 10% का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब है लेट अस फाइंड द सीपी। सीपी क्या होगा हम इन दोनों का, तो हम सीपी निकाल के हमारा जो लॉस है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। लॉस कैलकुलेशन की वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस है वो निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 5% है। मतलब सीपी अगर हम एक्स रख लें दोनों में, 5% इज इक्वल टू एक्स बाई 20, और इधर हो जाएगा ये एक्स बाई 10। एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, विच इज इक्वल टू एस पी 80,000. SP is equal to 80,000, so the CP would be X plus profit is equal to X by 20. So our overall SP is equal to 21X, which is cost price divided by 20. And finding this overall value would result us in the answer of this 20 and 5 zeros by 21. So this would result us in 76.190.48. This was our cost price for Buffalo 1. Let us calculate for this. Here we would take a SP. Here SP is equal to CP minus loss. Since there is a loss, there would be a minus sign. 80,000 minus CP is equal to X minus X by 10. This is minus, sorry. 9X by 10, 80,000. And X is equal to 80,000 multiply 10 by 9. So our overall X is equal to 8. This is a recurring number, so we will result us in 8, 9. So this is our CP for the Buffalo 2. Here profit and price was rupees 3809.52. Here our loss was rupees 888.89. So obviously, since our loss is greater than the profit, so the farmer has loss. Had an overall loss of how many rupees would he have the loss? Loss of 5079.37 rupees. So that's all for today. The question number 11 and 12 would be an homework for you. If you couldn't understand, I will show the answers in our next video, which would be related to the interest. This is a very interesting topic too, including the compound interest. And फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज की भी आंसर चाहिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इन आवर चैनल द आंसर्स, और प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और ये रहा आपका आज का होमवर्क।